अच्छा, अब अभी इस वक्त जो आज का जो लेक्चर है, इट्स बेसिकली अबाउट some theoretical concepts of financial modeling. ठीक है. So what we are going to do is that I will be first finishing up my talk, और उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को जो है वन बाय वन मैं इनवाइट करूंगा. If you have any questions, so what you need to do is that while I'm talking and you're looking at the slides, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो आप नोट डाउन कर लें. और उसके बाद व्हेन आई फिनिश माय टॉक एंड आई आस्क यू टू रेज योर क्वेरीज, देन यू रेज योर क्वेश्चन. उसका रीज़न जो है कि ये है कि बहुत से जो आपकी जो क्वेरीज होती हैं, वो जैसे जैसे जो है वो लेक्चर जो है प्रोसीड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं. ठीक है. और अगर उसके बाद भी जो है वो कोई क्वेरी रह जाएगी, तो वो उसको फिर हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. और आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली we shall start our course with the component of the financial modeling. Okay ji, so let's begin financial modeling. So assumption मेरा जो है वो ये है कि आपको जो है वो of course assumption क्या है, I know that you know the basics of finance and बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. रिमेंबर दैट अ फाइनेंशियल मॉडल इज नथिंग but something that you are able to solve on paper, but it is repetitive and it is so complex that there is a margin of error. So what you do is that you actually take help from the computer to create a model for it, or create a model for you. All right. So if you cannot solve a problem, if you cannot formulate or solve a problem on paper, remember that you cannot create a financial model using computers for that. ठीक है. उसकी वजह जो है वो ये कि कंप्यूटर्स को जो लॉजिक देते हैं, ठीक है, वो लॉजिक जो है वो हमने देनी होती है. ओके. तो अगर हमारी अपनी लॉजिक जो है वो क्लियर नहीं है about certain things, how to solve certain problems, that simply means that the computer is not going to solve the problem either. ठीक है जी. अच्छा, अब एक और है जो assumption है वो ये है कि जनाब आपको जो है वो बेसिक एक्सेल जो है वो आती है, और अगर नहीं आती, कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं है. As we proceed, I will be giving you the videos with step-by-step directions how to actually use different functions of Excel. So even if you haven't not used Excel before, it should not be an issue. Okay, the first we shall start with the definition of financial modeling, or what a financial model is. So as you can see, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड जो है सबको विजिबल है? Yes. Okay. Okay. Good. Good. Okay. So a financial model is defined as a model that represents in mathematical terms the relationships among the variables of a financial problem, so that it can be used to answer what if questions or make projections. So यहाँ पे दो चीजें जो है वो बहुत important है. पहली चीज जो है वो ये है कि एक financial model includes certain variables, that is independent variables and dependent variables. Number two, it includes, or it defines, or it explains in mathematical terms or mathematically the relationship among the different variables. And what is the purpose of the financial model? To answer the what if questions or make projections. So kindly remember that this definition of the financial model, you must know it all the time. The number one, it includes some variables. Some are independent variables, some are dependent variables. Number two, the relationship among the variables are defined in mathematical terms. And the objective of developing a financial model is to answer the what if questions, or you can say that scenarios, or make
projections. Okay. A financial model can be designed to represent the performance of a financial asset or a portfolio of a business, a project, or any other investment. So these are the different applications of financial modeling that where you can use. Now, you also remember one thing that when we say financial modeling, right? It's a general term and it is not a specific term that we use. So, for example, in different fields, people can call them differently. So, for example, if you, as you can see on the screen, for example, the reference may relate to accounting and corporate finance, and we can also relate financial model to quantitative finance. Okay, so financial model itself or financial modeling itself is a general term that can be applied in various disciplines. Moving forward, so typically by financial modeling is understood to mean an exercise in either asset pricing or corporate finance. तो normally जब हम बात करते हैं financial model की, so we normally mean that a financial model is something that is applied in finance, or we can say that a financial model generally deals with things that can be quantified. Okay, so and when we talk about the financial model itself, it also includes a set of hypotheses. Okay, hypothesis क्या होता है जनाब? Hypothesis is basically an educated guess about the relationship among different variables. So a financial model helps us verify the hypothesis or the guessed relationship between different variables. So when you create financial models, okay, you need to understand or need to remember that when you are including variables in your financial model, then your objective is to capture as many relationships among the variables as possible. So for example, अगर आपने 3 या 4 variables जो है वो अपने financial model में जो है अगर आपने include किए हैं, तो आपकी कोशिश जो है वो ये होगी कि इनके दरमियान जितनी इंटरडिपेंडेंसीज या जितनी रिलेशनशिप्स होती हैं उन सबको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए. ओके, देन आप अपने मॉडल को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि अगर आपको व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछने हो, ठीक है, जो कि नॉर्मली जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, तो आप आसानी से जो है वो व्हाट इफ क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर सकते हैं. ठीक है, राइट नाउ इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जी हमने मॉडल को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि ताकि व्हाट इफ क्वेश्चंस को जो है वो इजीली जो है वो हम आंसर कर सकें. So we shall understand it when we create different financial models and we practice developing them. But as of now, you should understand that a financial model should be structured in such a way that it is easy for the users of a financial model to ask the what if questions or to get the answers to the what if questions as easily as possible. Now, we said that we would like to capture as many interdependencies or as many relationships among the variables as possible. We should also understand that while this is our desire, some of the relationships among the variable would be easy to establish and find out, while some of the relationship may be difficult to find out and may be non-existent. Okay, so when we are incorporating different variables into our financial model, we should not spend too much time to determining a relationship among the variables if we at the I mean in the beginning or after doing some work, we
see that it is difficult to find relationship, then what we will do, we will actually spend more time on establishing or determining the relationship amongst variables which are clear enough for us. Okay? Now, if you have more and more relationships that are possible among the variables in your model, right? That means that your model is going to be more useful. That is कि आपका फाइनेंशियल मॉडल जितनी ज्यादा रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर सकता है उन वेरिएबल्स के दरमियान के जो कि आपने अपने फाइनेंशियल मॉडल में यूज की हैं, आपका मॉडल उतना ही ज्यादा यूजफुल होता है. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज इफ योर मॉडल कैन establish or examine many relationships among the variables, that means your model will be able to answer many what if questions. Okay, and this is the ultimate objective of financial model. Okay जी, अब इस स्लाइड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि these are the different applications of the financial modeling. ठीक है, especially in the accounting and the corporate finance. For example, when we talk about corporate finance, some of the typical applications of financial modeling includes business valuation, such as discounted cash flows, scenario planning, capital budgeting, financial statement analysis, and etc. So these are the typical applications of financial modeling in the accounting and corporate finance. Now, moving forward, अगर हम ये बात करें कि जनाब फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है, या फाइनेंशियल मॉडलर इज अ पर्सन हु डेवलप्स फाइनेंशियल मॉडल. तो अगर हम ये कहें कि जनाब के वो कौन से लोग होते हैं, ठीक है, या वो कौन से रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं या कौन सी प्रेफर्ड स्किल्स होती हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए so that he or she can become an effective modeler. Okay, so normally जो फाइनेंशियल मॉडलर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो जॉब टाइटल होता है इज कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं नॉर्मली इनका अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, दे शुड हैव एन एमबीए और एमएसएफ, दैट इज मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस. ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है वो ऑप्शनल कोर्स वर्क या एडिशनल कोर्स वर्क किया हुआ फाइनेंशियल मॉडलिंग में. ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग के डोमेन से ताल्लुक रखते हैं तो उस सूरत में जो है फॉर एग्जांपल आपने इंटरनल ऑडिटिंग में जो है फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्टिफिकेशन की हुई है या आपने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की अगर आपने जो है वो सर्टिफिकेशन की हुई है, तो ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपको हेल्प आउट करती हैं. बट वंस अगेन दीज सर्टिफिकेशंस आर नॉट स्पेसिफिकली geared towards the financial modeling. So you need to get some additional coursework, such as the course you are doing right now, in order to understand what a financial model is and how to develop effective financial model. Okay. Acha, after we talked about the skills and the educational qualification of a financial modeler, we shall talk about what kind of software that we can use to develop financial modeling. Okay, so there are many software available, but normally when we talk about financial models, Microsoft Excel is the preferred tool to develop various financial models. Okay. बहुत से जो है वो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी जो है अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो कि आसानी से जो है अवेलेबल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो ऑलरेडी जो है वो इस्तेमाल कर रही है और करती आई है टू डेवलप फाइनेंशियल मॉडल्स. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, which is also called the spreadsheet software, is a software of choice when we talk about developing the financial models. ठीक है, स्प्रेडशीट बेस्ड मॉडल्स में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल हो सकती हैं, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर that why the Microsoft Excel is preferred. It is easily available. There are a lot of documentation. There are a vast variety of already developed financial models are available. So that's why we prefer the use of the spreadsheet software or Microsoft Excel. And in this particular course, we shall also be using Microsoft Excel to develop the financial
modelers. Okay ji. Okay, now if you look at the last bullet of this particular slide, it says in general modeler use point values and simple arithmetic instead of probability distributions and statistical measures. The model does calculate a single value for the asset or project, but without providing information on the range, variance, and sensitivity of outcome. अच्छा, अब बात यह है कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स को जो है वो अगर अपने मॉडल में इंक्लूड करते हैं, तो दिस इज समवॉट more called more complex financial model or called the stochastic models के जिसमें आप अनसर्टेनिटी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल में बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और यूजिंग प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ. In this course we shall not be talking about the stochastics model because this is somewhat advanced topics that are not appropriate to be covered at an introductory level. However, I will be talking briefly about what these models actually do and what are some resources that you can consult if you are interested in developing these advanced model later on. इसके बाद जनाब ये कुछ आपके पास एप्लीकेशन हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्वांटिटेटिव फाइनेंस में. ठीक है, ऑप्शन प्राइसिंग हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, क्रेडिट स्टोरिंग हो गई, पोर्टफोलियो प्रॉब्लम्स हो गए, रियल ऑप्शंस, रिस्क मॉडलिंग एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट applications of financial modeling in quantitative finance, remember that these models are inherently stochastic. Stochastic का मतलब क्या है कि these models will incorporate probability. And another thing is कि जब आप for example probability को जो है वो आप account नहीं करते अपने financial model में, तो normally जो है वो आपका जो financial model जो value generate करता है वो single digit values होती हैं, ठीक है, या discrete values होती हैं. लेकिन जब आप अपने मॉडल में प्रोबेबिलिटी को जो है जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन these values are not discrete. ठीक है, these values become continuous, so you get a range of values when you incorporate probability in your model, and you get discrete values when you do not incorporate probability in your model. So the quantitative finance financial models are the advanced level of financial modeling, right? So we are not going to cover that, as I told you earlier. Moving forward, okay. Now you can see that if you want to do financial modeling in corporate finance, in quantitative finance, you need to have a special set of skills, right? Normally, it will be preferred that you have a higher level degree, okay, such as a PhD level degree or a Master of Finance. That is a specialized degree. For example, a general MBA degree or an MBA in finance degree may not be helpful for you, and you will have to go for advanced education or advanced qualification. Then Excel is not going to be the choice of software for creating such advanced financial models. You will be going to use either specialized programming languages or a specialized software such as MATLAB. Okay, then you can also use some of the commonly used programming languages such as C, C++, Java, and one of the most popular languages nowadays for such models is called R or Python. ठीक है, R भी यूज की जा रही है, Python भी यूज की जा रही है, C, C++, Java, ये सारी की सारी जो है ये commonly used programming languages हैं if you want to create the stochastic financial models. अच्छा जी, अब हमने ये सारी की सारी जो है हमने बात कर ली है, ठीक है. तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सेल की बेसिक्स की. ठीक है, कि एक्सेल में वो कौन कौन से जो है वो बेसिक जो है फंक्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं कि जिनके साथ जो है वो आपको रोजाना की बुनियाद पर जो है काम करना पड़ेगा व्हेन यू डेवलप द फाइनेंशियल मॉडल. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वर्कशीट इज समथिंग दैट व्हेनेवर यू ओपन एन एक्सेल फाइल, ठीक है, एक्सेल फाइल विल ओपन अ वर्कशीट फॉर यू. और वर्कशीट इज बेसिकली अ पेज कि जिसके ऊपर जो है अपना मॉडल के आप क्रिएट करते हैं. एंड एक्सेल फाइल can include multiple worksheets. Remember, an Excel file can include multiple worksheets. Then you need to understand formatting. Formatting का मतलब जो है वो ये कि आपके सामने जो numbers और digits और बाकी तमाम चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, उसका format किस तरह करेंगे. For example,
फॉन्ट्स को जो है आप किस तरह चेंज करेंगे, डिफरेंट जो सेल्स हैं एक्सेल के अंदर जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है आप किस तरह जो है डिफरेंट कलरिंग कर सकते हैं ताकि वो विजिबल हो सके, एंड सो ऑन। फिर आप फार्मूलाज को जो है वो कैसे एंटर करते हैं, किस तरह से उनके साथ वर्कआउट करते हैं। पेस्ट स्पेशल का फंक्शन हम उसकी हम बात करेंगे। पेस्ट स्पेशल जो है वो हमको अलाउ करता है कि जब हम एक्सेल के अंदर जो पर्टिकुलर डेटा जो हमने कॉपी किया है, जब उस डेटा को जो है वो हम किसी दूसरे जगह पे जो है जब हम उसको पेस्ट करते हैं, जब हम उसको वहाँ पे शामिल करते हैं, देन देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल कि हम जो है वो जो डेटा को हम किस तरह से पेस्ट करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने जो है वो एक सेल जो है कॉपी किया है कि जिसमें जो है वो किसी इक्वेशन का रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम जो है वो सिर्फ जो है वो जो रिजल्ट आया है वहाँ पे, उस रिजल्ट को किसी दूसरे सेल में पेस्ट कर दें। और ऐसा भी होता है, आ सकता है कि जनाब कि हम जो है वो एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करें कि हम जो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये वैल्यू जिस फार्मूले से कैलकुलेट की गई है उस फार्मूले के अंदर इंटरेस्टेड है। तो उस सेल में जो है वो आप फार्मूला पेस्ट करते हैं रादर देन पेस्टिंग द वैल्यू। Once again, these are the things that you are going to learn very quickly when you actually gain hands-on experience with Excel. Right now, what I would like you to do is that you need to remember that these are the features that you will need to understand and then you will need to work with on the daily basis when you are creating financial models. ठीक है? Then cell references क्या होते हैं, relative वो क्या होता है, absolute क्या होता है, mix क्या होता है, and then cell and range name. These are some of the very common Excel features that you will be using. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब के, हमने पहले भी कहा था कि एक फाइनेंशियल मॉडल जो होता है, फाइनेंशियल मॉडल के अंदर दो तरह के जो है वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके जी, कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं जनाब? दीज आर कॉल्ड द इनपुट और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई जो है जनाब, x प्लस वाई हमारे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कि जिनकी वैल्यूज को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं या देन इसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है वो एक और पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम कहते हैं जनाब पैरामीटर्स, ठीक है। Parameters are the independent variables in that their values are also provided by the creator or user of the model, but the difference is that their values are expected to remain constant or change infrequently. So मिसाल के तौर पर जो है वो आप अपने फाइनेंशियल मॉडल में जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनाब के कंपनी जो है वो उसकी टैक्स प्रोजेक्शन जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो अब जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर है कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो है वो आपके पास जो है वो एक वैल्यू है कि जनाब के इस इक्वेशन में जो है जब हम डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे इनपुट वेरिएबल्स की, तो हमारे पास जो है वो टैक्स आ जाएगा। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में जो है वो एक चीज होगी, फॉर एग्जांपल टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट एक ऐसी चीज है कि जो कि जिसको हम कहेंगे कि जनाब के टैक्स रेट जो है वो बदलता नहीं है, टैक्स रेट जो है वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास टैक्स रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है 35% है, तो वो 35% ही रहेगा, ठीक है, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल इसको जो है वो आप अलग से जो है मेंशन करते हैं, इसको आप फॉर एग्जांपल इक्वेशन में आप लेके तो जाते हैं लेकिन इसको आप अलग से मेंशन करते हैं to differentiate it from the other independent variables so that the users understand that these are the parameters, ठीक है। Don't worry if you are not getting it right now, just remember that parameter is a type of independent variable। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसकी वैल्यू जो है वो या तो कांस्टेंट रहेगी या बहुत कम चेंज होगी व्हेन यू यूज इट इन द फाइनेंशियल मॉडल। Moving forward, the second type of variable is called the dependent variables, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनकी वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जनाब के z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो z जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y. Now, if you look at the second bullet of this particular slide, okay, it is possible to distinguish between intermediate dependent variables and output dependent variables. Okay, so independent dependent variables are used in further calculations, whereas output dependent variables are not. ठीक है, so normally अगर आप फाइनेंशियल मॉडल की आप बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है वो आप इंटरमीडिएट और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल को कमी देखते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो है वो एक ही तरह का जो है वो
डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होता है। नॉनदलेस फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जनाब इंटरमीडिएट डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो है वो ये है कि ये आपका फाइनल वेरिएबल नहीं है। ये एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसकी वैल्यू को आपने किसी दूसरी जगह पे जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सादा कहता हूँ कि जनाब W इज इक्वल्स टू T प्लस U, ठीक है, एंड देन Z इज इक्वल्स टू X प्लस Y प्लस W। तो उसका मतलब जो है ये हुआ कि पहले इक्वेशन में W जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू को जो है वो हमने फाइनल आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन के अंदर जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। बट नॉनदलेस जब हम फाइनेंशियल मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो है नॉर्मली हम एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करते हैं, वहाँ पे हम ये इंटरमीडिएट और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की डिस्टिंक्शन जो है वो हम फॉलो नहीं करते। बट नॉनदलेस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको इल्म होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है जनाब के जब आप फाइनेंशियल मॉडल जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, सो व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। सो देयर आर मेनी स्टेप्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल। और जहन में रहे आपके कि जब आप कभी भी फाइनेंशियल मॉडल जब आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, यू विल बी फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स, ठीक है। You must not miss out any of these steps because these are the standardized, defined steps to create an efficient and effective model. So, the first step is to define and structure the problem. ठीक है जी? So, when anyone asks you a question, ठीक है, कि जिसको आंसर करने के लिए जो है आपको एक फाइनेंशियल मॉडल चाहिए, तो याद रखिएगा, when you are starting you only have a very vague idea कि जनाब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो उसका जो आंसर है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। मिसाल के तौर पर जो है वो जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ा है कि जनाब कि आपका बॉस जो है वो आपसे पूछता है कि जी मुझे बताओ कि हमारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो जो करंट सिनेरियो है, जो करंट कंडीशन चल रही है, ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है वो हमारा रेवेन्यू जो है वो तकरीबन कितना हो सकता है। अब आप उसके जवाब फौरी तौर पर तो नहीं दे सकते। आपका जवाब यकीनन ये होगा कि वी विल हैव टू क्रिएट अ मॉडल इन व्हिच वी विल नीड टू पुट इन द रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू किन चीज़ों से मिलके जो है बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी विल नीड टू अप्लाई द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप अप्लाई करेंगे देयर आर गोइंग टू बी सेवरल वेरिएबल्स, वो वेरिएबल के साथ चेंज होंगे, उसको भी आपने चेक करना है। उसके बाद ही फाइनेंशियल मॉडल को क्रिएट करने के बाद और रन करने के बाद ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपने बॉस को जो है ये बता सकेंगे 5 साल के बाद जो है हमारा रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, ठीक है। So when you define and structure the problem, ठीक है, then you also need to ascertain or you need to establish that how accurate or realistic the outputs need to be। आपका जो फॉर एग्जांपल बॉस है वो कहता है कि जनाब मुझे आप रेवेन्यू की फिगर दें। अब आप कहते हैं कि जनाब के रेवेन्यू की फिगर जो है आपको किस में चाहिए। अब अगर वो कहता है कि जनाब कि मुझे जो रेवेन्यू फिगर चाहिए वो मिलियन में चाहिए, ओके, तो जब आप एक्सेल में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वहां पर फिर आपको जो है ये बात एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको राउंड ऑफ करना पड़ जाए तो जब आप मिलियंस को राउंड ऑफ करेंगे दैट कैन बिकम अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जनाब कि जब मैं प्रोजेक्शन करने के लिए जा रहा हूँ तो जो मेरा यूजर है, तब जाहिर है आपका बॉस उस मॉडल का यूजर है, तो उसे जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आउटपुट जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो एक्यूरेट और रियलिस्टिक चाहिए। of the second step is going to be input and output variable of the model, ठीक है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा जनाब के ये जो मेरा मॉडल है इस मॉडल में फॉर एग्जांपल जनाब पहली बात तो ये कि इक्वेशन क्या बनेगी, कौन से वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उन वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन का मतलब क्या है, that how you will be building the mathematical equation that describes the relationship among the independent and dependent variables, ठीक है। So this is going to be the second step. Then the third step would be who will use the model and how often। जनाब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि जनाब ये मॉडल इस्तेमाल कौन करेगा, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि मॉडल कितना मतलब कितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज क्या होगी। उसका रीजन जो है वो होता है कि जिसने मॉडल इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर जो है वो लोग जो है वो जो मॉडल बनाते हैं तो वो जनाब उसको बहुत ज्यादा जो है वो रंग बिरंगा कर देते हैं,
एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं जनाब, यहाँ कलरिंग कर दो, यहाँ पे स्पार्कल लाइन बना दो, इसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो। लेकिन ये जिसको फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली जो है वो कहता हूँ गोला गंडा, कि आपने अपने मॉडल को जो है गोला गंडा तो बना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि गोला गंडा देख के खुश होते हैं। बहुत से लोग होंगे कि जो कहेंगे कि जनाब कि हमें ये गोला गंडा या फॉर्मेटिंग जो है आपने ये इतनी एक्सटेंसिव फॉर्मेटिंग की है या जो कलरिंग की है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in different colors. What we are interested in is the output, is the number. We are interested in how realistic your output is, how accurate your output is. We are not interested in different colors. And number two, how often you are going to use the model. बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप जो एक एक्सेल का जो मॉडल क्रिएट करते हैं उसमें आपके पास जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वैल्यूज जो होती हैं वो रैंडमाइज्ड होती हैं। तो यू नीड टू रीरन द मॉडल बाय प्रेसिंग द रिफ्रेश की इन द मॉडल। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा सेट है, ठीक है, वो कितना बड़ा है। बाद औक़ात जो है वो डेटा सेट जो है बहुत ह्यूज होता है, और अगर आप अपने मॉडल को बार बार जो है रिफ्रेश करें तो योर मॉडल कैन हैंग अप एंड इट विल बिकम अनरिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इट कैन बी अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो यूजर है वो आपका यूजर जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा जनाब कि मैं आपके मॉडल को जितनी दफा भी रन करूं, ये मुझे जो है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो जो आउटपुट है वो शो करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोसेसिंग पावर इतनी नहीं है, ठीक है, और आप बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं उसको, और एक बहुत लार्ज डेटा सेट है कि जिसके ऊपर जो है रन हो रहा है, देन इट कैन हैंग अप एंड इट कैन कॉज ट्रबल फॉर द यूजर्स। स्टेप 4 जो है वो ये है जनाब कि यू शुड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंकिंग। आपने उसको जो है वो बताना है कि जनाब कि मैंने जो मॉडल बनाया है, मैंने जो जो डिफरेंट रिलेशनशिप मैंने एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है, ये किस तरह से जो है कैलकुलेट होंगी। ठीक है, अगर आप अगर आप खुद श्योर नहीं है कि जनाब ये जो आपने जो रिलेशनशिप और ये जो इक्वेशन बनाई है इट कैन बी सॉल्व, ठीक है, रिमेंबर, इफ you cannot do the calculations by hand yourself, then it simply means that a computer will not be able to develop the same for you. आपने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया, उसकी आपने रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन की, आप उसको अगर पेपर पे सॉल्व नहीं कर सकते खुद से, इसका मतलब जो है वो ये कि कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं कर सकते। So as a modeler, it is your responsibility to understand the financial and mathematical aspects of the model. ठीक है, कि मैथमेटिकली ये जो वेरिएबल्स जो है ये किस तरह से जो है ये आपस में लिंक्ड हैं, और फाइनेंशियली जो है फॉर एग्जांपल ये किस तरह से जो है लिंक्ड है। ओके, स्टेप 5, डिजाइन द मॉडल। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जब आप मॉडल को डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली जो है एक चीज रिकमेंड की जाती है, वो ये रिकमेंड की जाती है जनाब कि आप जो है वो पहले अपने पास जो है वो स्टेप्स जो है वो लिख लें, कि जब आपका मॉडल जो है वो काम करेगा तो मॉडल जो है फॉर एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होगा और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो डिजायर्ड आउटपुट है जो है वो उसको जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, एक और जो एस्पेक्ट होता है डिजाइनिंग ऑफ द मॉडल में वो ये कि जब आप मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है हम ये कहें कि जनाब कि हमने जो एक मॉडल बनाना है, उस मॉडल में जो है वो हमने कंपनी की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करनी है। अब जब कंपनी की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करनी है तो उसमें जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी है। तो सवाल जो है वो ये है कि जनाब के आप अगर एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, what would you like to do? As I told you earlier that an Excel file can have multiple worksheets, ठीक है, and these worksheets can be linked together. तो एक अच्छी डिजाइन अप्रोच जो है वो ये होती है कि बजाय इसके कि तमाम के तमाम जो आपके मॉडल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाई, आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाई, इन सब को एक पेज पे या एक वर्कशीट पे डालने के बजाय एक बेहतर अप्रोच जो है वो ये होती है कि हर चीज को एक अलग अलग वर्कशीट पे बनाया जाए, और इसके बाद जो इनके दरमियान फॉर एग्जांपल जो इंटरडिपेंडेंसी है कि जनाब इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट को कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, ठीक है, उन पे डिफरेंट जो है फॉर एग्जांपल कंपोनेंट होने चाहिए, जैसे IS है या बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है, और उसके बाद जो है वो जो वैल्यूज आपस में जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसको जो है वो आपस में इंटरलिंक करते हैं। इससे आपको फायदा जो है वो ये होता है दैट योर मॉडल बिकम्स एलिगेंट, ठीक है, एंड the user can
understand that how your model works, ठीक है, and how your model actually calculates the output. अच्छा जी, स्टेप 6 जो है वो ये है जनाब कि आप जो है वो अपना जो मॉडल है, ठीक है, उसको जो है वो आप एक्सेल के अंदर जो है वो क्रिएट करें। डिजाइनिंग में जो है वो तो बेसिकली आपने जो है स्टेप्स बताए थे ना कि जनाब आप जो है वो एक्सेल के अंदर जो है अपना मॉडल जो है किस तरह से क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 6 में यू एक्चुअली फॉलो दीज स्टेप्स टू डेवलप योर मॉडल। स्टेप 7, टेस्ट द मॉडल। देखिए, मॉडल टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि अगर आपने अपने मॉडल को डेवलप करने के बाद टेस्ट नहीं किया, ठीक है, कि जनाब के जो उसकी आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, then you will not be able to understand or realize many of the mistakes that you have made. अब कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं वो सिंटैक्स एरर्स होती हैं, कुछ जो एरर्स होती हैं वो लॉजिकल एरर्स होती हैं। सिंटैक्स एरर का मतलब जो है वो ये कि फार्मूला गलत लिख दिया आपने एक्सेल के अंदर, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से फार्मूला लिखना चाहिए था वैसे नहीं लिखा, सिंटैक्स एरर है। लॉजिकल एरर जो है वो ये है कि आपने फार्मूला तो सही लिखा लेकिन वेरिएबल गलत डाल दिए। तो जब मॉडल कैलकुलेट होगा तो उसमें जो आउटपुट है वो आउटपुट वैसी नहीं आएगी कि जैसी आउटपुट आपको चाहिए थी। दैट विल बी कॉल्ड अ लॉजिकल एरर, ठीक है। फॉर्मूला आपने सिंटैक्स वाइज या लैंग्वेज वाइज सही लिखा है लेकिन उसमें वेरिएबल्स जो है वो आपने गलत डाले। The step number 8 of the financial model is to protect the financial model, ठीक है। अच्छा, मॉडल को प्रोटेक्ट करना जो है वो क्यों जरूरी है? मॉडल को प्रोटेक्ट करना जो है वो इसलिए जरूरी होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम ये कहें कि पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्शन में जो है हमें फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फाइनेंशियल मॉडल को जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट आपने नहीं किया, ठीक है, तो उससे जो है वो आपको डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज पहला जो है वो ये होगा, फॉर एग्जांपल के जनाब के अगर आपने आपका जो मॉडल था उसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, और ये फाइल जो है वो किसी ऐसे शख्स के हाथ में जो है लग जाती है कि जो कि ऑथराइज नहीं है उस चीज को देखने के लिए, और आपने जो है वो अपनी एक्सेल जो वर्कशीट थी उसको जो है वो आपने प्रोटेक्ट नहीं किया या आपने पासवर्ड जो है नहीं लगाया, then your sensitive information can go into the hands of the people that you don't want to. इसके बाद जब आप मॉडल का आप क्रिएट करते हैं तो मॉडल क्रिएट करते वक्त भी आप ऐसा काम ये कर सकते हैं कि जो डिफरेंट जो है फॉर एग्जांपल जो सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स को जो है वो आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के उन सेल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को जो है वो जो दूसरा यूजर जो है वो चेंज ना कर सके। जब आप एसक्यूएल का काम करते हैं तो वंस अगेन आप बेसिकली इस चीज की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल मॉडल, ठीक है, उसने जो आउटपुट जनरेट करनी है, उसने जो काम करना है, दूसरे लोग के जिन्होंने जो है वो उस मॉडल को डेवलप नहीं किया और जो उस मॉडल की जो इंटरनल वर्किंग है उसको जो है वो सही तरह से जो है वो नहीं समझते, तो वो आपके मॉडल के साथ जो है कोई ऐसी छेड़छाड़ ना करते हैं कि जिसके नतीजे में आपका जो मॉडल है वो डिजायर्ड आउटपुट जनरेट ना करे और उसके बाद यूजर जो है वो आपको ब्लेम दे कि आपका जो मॉडल था, ठीक है, वो मॉडल जो है वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं कर रहा। एक और टेक्निक जो है हमारे पास ये होती है कि जनाब के हम जो है वो मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर जो मैक्रो का जो फंक्शन होता है, मैक्रो का फंक्शन जो है वो हमें इट इनेबल्स अस टू एक्चुअली कोड और रिकॉर्ड ऑल द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल, ठीक है। तो वी शैल बी डूइंग मैक्रोज एज वेल। तो उसमें भी फायदा जो है वो होता है कि जब हम एक्सेल शीट हम भेजते हैं तो हम या जो मॉडल जो भेजते हैं तो उस मॉडल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल हम पहले से कोई डेटा या कोई चीज नहीं डालते, ठीक है। हम जो है वो यूजर को हम ये कहते हैं कि भाई कि आपने जो है वो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, आप सिर्फ इनके वैल्यू डालें और ऊपर जो है कि मैक्रो का जो बटन हमने आपके लिए डिजाइन किया है उसको आप क्लिक करें और उसके बाद पूरा फाइनेंशियल मॉडल जो है वो आपके लिए जो है तैयार हो जाए। इससे जो हमको फायदा होता है वो ये होता है कि अगर यूजर कोई गलती करता है तो हम सिंपली उसको ये कह सकते हैं कि जी कि आप हमने जो आपको जो मॉडल फाइल भेजी है उसको जो है वो आप बंद करें, दोबारा ओपन करें और सिंपली पैरामीटर्स की वैल्यू दोबारा डाल के जो है वो मैक्रो के बटन पर आप दोबारा क्लिक करें, ठीक है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जी यूजर ने जो है वो उस मॉडल के अंदर जो है वो कहाँ पे जो है गलती कर दी है, कहाँ पे प्रॉब्लम कर दी है जिसकी वजह से ये जो मॉडल है ये अपनी डिजायर्ड आउटपुट जो है जनरेट नहीं कर रहा। अच्छा, स्टेप 9, डॉक्यूमेंट द मॉडल। मॉडल के डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? मॉडल आपने किस तरह से बनाया, ठीक है, मॉडल के अंदर जो आपने जो डिफरेंट जो पैरामीटर्स लिए थे, जो डिफरेंट जो आपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे, वो कौन से वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यूज जो थी वो आपने कहाँ से जो है वो ड्राइव की। अपने मॉडल को डेवलप करते वक्त जो है वो आपने अगर जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे उनके बारे में अगर आपने कोई असम्पशन लिए थे, वो असम्पशन जो थे वो क्या थे, आपका मॉडल क्या आउटपुट जनरेट करता है, आपका मॉडल क्या कर सकता है,
आपका मॉडल क्या नहीं कर सकता। ये तमाम की तमाम वो चीजें होती हैं कि जो कि आप अपने फाइनेंशियल मॉडल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मॉडल, अगर आप ये नहीं करते तो आप में और एक जो मैट्रिक करने के बाद ये जो गली में जो है, मोहल्ले में जो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि जो कि आपको जो है वो एक्सेल का यूज सिखाते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक के बच्चे ने जो है वो अगर एक्सेल सीखी है तो वो भी यही काम कर सकता है कि जो कि आपने किया है। लेकिन आप में और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सोफिस्टिकेशन का, कि अगर आपने तमाम के तमाम जो स्टेप्स जो है आपने फॉलो किए हैं, आपने मॉडल की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, देन इट विल बी कॉल्ड अ फाइनेंशियल मॉडल, अ प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल। और अगर आपने ये तमाम स्टेप फॉलो नहीं किए, आपने सिंपली एक एक्सेल की शीट उठाई और उसमें जो है बस आपने फार्मूला लगा के और वो मैक्रो वगैरह लगा के सारा काम कर दिया, देन देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट स्टूडेंट हु हैज डन जस्ट हिज मैट्रिक एंड लर्नड एक्सेल, ठीक है। तो ये स्टेप्स फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते, देन आई एम सॉरी बट योर मॉडल इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड फाइनेंशियल मॉडल। स्टेप 10, अपडेट द मॉडल एज नेसेसरी। आप जब मॉडल पहली दफा जब आप डेवलप करते हैं, जो आपने जो पिछले 9 स्टेप्स आपने फॉलो किए हुए थे, इसके बाद जो मॉडल जो है फॉर एग्जांपल जब यूजर के सामने प्रेजेंट करते हैं, यूजर जब उसको यूज करता है, ठीक है, देन ऑफ कोर्स यूजर में आस्क टू include certain changes in the model, and this model will be updated as it is used, ठीक है। So step 10 would be that you will need to update the model as necessary, and when you update the model, you will need to include these updates and these changes in the model documentation as well. ओके जी, सो अब यहाँ पे जो है वो जब हमने स्टेप्स डिस्कस कर लिए कि एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप करने के लिए जो है कौन से जो है वो आपको स्टेप्स लेने होते हैं, तो 10 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि अगर एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम कैसे बताएंगे कि एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल और बुरा फाइनेंशियल मॉडल, इसमें फर्क क्या होता है। तो जनाब, अच्छे फाइनेंशियल मॉडल का जो पहला एट्रीब्यूट होता है वो होता है रियलिस्टिक, ठीक है। कि आपने जो एजम्पशन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स और इनपुट आपने यूज की है अपने मैथमेटिकल मॉडल में, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है वो आप एक ऐसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जो है वो आपने अपने मॉडल में जो है एजम्पशन लिया है कि जो कि बहुत ही सुपरफिशियल है। मिसाल के तौर पर आप ये कहेंगे जनाब कि मैं अपनी कंपनी के रेवेन्यू की प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, और मेरा एक एजम्पशन जो है वो ये है कि मेरी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगले 5 साल में 60% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा। अब 60% पर एनम के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ने का जो एजम्पशन है आपका, वो टोटली अनरियलिस्टिक है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंडस्ट्री में जो है वो ऑन एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ क्या है, और आप मुझको कहेंगे जी कि 7% है। 7% मैक्सिमम है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी है उसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी 7% ज्यादा नहीं है। तो अब अगर आप कहें कि 60% के लिहाज से मेरी कंपनी का बढ़ेगा, इट इज नॉट रियलिस्टिक। एरर फ्री, ऑफ कोर्स, अगर आपका मॉडल जो है बहुत ज्यादा एरर जनरेट करता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड मॉडल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जो है वो ये है कि आपने अपने मॉडल को इस तरह से जो है डिजाइन किया है कि पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा जो रिलेशनशिप्स हैं अमंग द वेरिएबल्स वो जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और नंबर 2 जो है वो ये है कि आप अगर चाहें तो मॉडल के अंदर जो है वो चेंजेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हेन यू डेवलप फाइनेंशियल मॉडल योरसेल्फ, दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। बट राइट नाउ do understand that flexibility means that you can make changes around easily, right? And it is easier for you to come up with the answer to as many what if questions as possible. Easy to use, आपका जो यूजर है उसको जो है वो मतलब मॉडल जो है उसके लिए जो है वो आसान होना चाहिए, वो समझ सके कि जनाब के मुझे जो है वो कहाँ पर जो है वैल्यूज मुझे पुट करनी है और कहाँ पर जो है वो मेरा जो आउटपुट वेरिएबल है, जो आंसर है, मुझे वहां से मिलेगा, ठीक है। जो आप इंटरफेस बना रहे हैं, इंटरफेस जो है वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। यूजर को पता होना चाहिए यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। और दिस इज हाउ द मॉडल गोइंग टू कैलकुलेट द आउटपुट फॉर मी, ठीक है। इजीली अंडरस्टैंडेबल फार्मूला, जब आप फार्मूलाज आप क्रिएट करें तो वेरिएबल्स के नाम फॉर एग्जांपल आप फार्मूलाज में जो रख रहे हैं, ठीक है, वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, ठीक है। अजीबो गरीब किस्म के जो है वो शॉर्ट हैंड किस्म के जो है आप नाम ना रखें कि जिसको जब देखें तो हम देख के जो है वो जो है पागल हो जाएंगे, यार ये क्या किस किस्म का नाम जो है वेरिएबल का आपने रखा है, ठीक है।
जुडिशियस फॉर्मेटिंग, जुडिशियस फॉर्मेटिंग का सिंपल सा मतलब जो है वो ये है कि उतनी ही फॉर्मेटिंग करें जितनी नेसेसरी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका यूजर जो है वो अगर एक प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का जो है मॉडल चाहता है, उसे आप एक प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का मॉडल ही दें। ठीक है, गोला गंडा बनाने की कोशिश ना करें। एप्रोप्रिएट नंबर फॉर्मेटिंग, आप जब नंबर को, जब फॉर एग्जांपल जब आप नंबरों को जो है एक्सेल में दिखा रहे हैं, अब एक्सेल में नंबर्स को जो है राउंड ऑफ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एक रूल जो है वो ये है कि आपके जो नंबर्स हैं जब आप उनको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे आप 2 डिजिट के लिए। तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 65.3468 तो आप उसको राउंड करेंगे 65.35। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेटिंग जो है बहुत जरूरी होती है क्योंकि कई दफा जो है ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, कई दफा ये कंपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनिमम हार्ड कोडिंग, हार्ड कोडिंग का मतलब जो है वही होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक फार्मूला लिखा, उस फार्मूले में जो है वैल्यूज जो है वो आपने पहले से इंसर्ट कर दी। मिसाल के तौर पर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टैक्स मुझे कितना पे करना है, तो जो इक्वेशन मेरी बनेगी उस इक्वेशन में टैक्स रेट भी जो है वो लिखा जाएगा। तो मैं एक काम ये करूंगा कि बजाय इसके कि मैं टैक्स रेट को एज अ नंबर उस फार्मूले में परमानेंटली लिख दूं, मैं टैक्स रेट का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है उस वेरिएबल को मैं उस इक्वेशन में इंसर्ट करूंगा कि जिससे मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसका मुझे फायदा जो है वो ये होगा कि अगर मुझे बाद में चल के टैक्स रेट को जो है चेंज करना पड़ जाए तो आई विल सिंपली चेंज द टैक्स रेट वेरिएबल एंड द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल ऑटोमेटिकली बी डन। लेकिन अगर मैंने अपनी जो इक्वेशन है उन इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मैंने हार्ड कोड कर दी है, पहले मैंने डाल दी, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि अगर कोई चेंज आता है किसी वैल्यू में तो मुझे अपने पूरे फाइनेंशियल मॉडल में हर जगह पे जाके उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। So this is what is called hard coding. We should avoid hard coding as much as possible. Then your model should be well organized and easy to follow. एक आपकी मैं एक एक्सेल का मैं आपको मॉडल खोलता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी तमाम चीज़ों से जो है वो पता चल जाना चाहिए कि जनाब कि आपका मॉडल जो है वो किस तरह से जो है स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और इट शुड बी इजी टू फॉलो। बस अच्छा जी ठीक है, पहली वर्कशीट पे ये बना हुआ है, दूसरी वर्कशीट पे ये है, तीसरी वर्कशीट पे ये है, एंड सो ऑन। गुड आउटपुट प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की हैं, याद रखिएगा कि इतने ज्यादा कैलकुलेशन को जो है वो मतलब आदमी को पढ़ना मुसीबत होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने यहाँ पे कहा, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो if possible and if it is appropriate we try to use graphics or charts or something like that so that we can give the user the information he requires. For example अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि जनाब कि मुझे जो है वो पिछले 10 सालों की जो है मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे प्रोजेक्शन दिखाओ कि किस हिसाब से जो है वो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बढ़ रही है। तो एक तरीका जो है वो ये है कि मैं सिंपली जो है वो उसके सामने जो है वो 10 साल की फिगर्स रख दूँ। ठीक है, लेकिन 10 साल की फिगर्स रखूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब चेंज आ कैसा रहा है। लेकिन अगर उसी आउटपुट को मैं एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो वो उस इन्फॉर्मेशन को समझना जो है मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, गुड डॉक्यूमेंटेशन, आई कैन नॉट emphasize anymore about the importance of the documentation itself. ठीक है, गुड डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट फॉर अ गुड मॉडल। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये है कि योर मॉडल इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, देन डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब कि अगर आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो इनपुट जो है वही देगा जो कि आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आपने जो है वो एक मतलब सेल में जो है वो यूजर से जो है पूछा है कि आप जो है मुझे ये बताइए कि आपकी जो है वो पर मंथ सैलरी क्या है। ठीक है, तो यूजर जो है अगर उस पर मंथ सैलरी में की जगह अपना नाम लिख दे, ठीक है, तो जब आप एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल फेस अ डाटा वैलिडेशन इशू, बिकॉज एक्सेल वुड रिक्वायर उस सेल में जो है आपने एक क्वांटिटेटिव फिगर इंसर्ट की है। ठीक है, जबकि आपने जो है वो बात समझी नहीं और वहां पर जो है वो आपने अपना नाम इंसर्ट कर दिया जो कि टेक्स्ट है। So in your model, you need to provide checks and controls so that only the desired values are entered. ठीक है, we will do it. We will understand it more when we do hands-on exercises and creating the financial models. डॉक्यूमेंटिंग की जो है हमने बहुत ज्यादा जो है बात कर दी है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह डॉक्यूमेंट करते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है, एक कहने का रफ स्टैंडर्ड जो है ये होता है कि आपने जो है वो तमाम के तमाम जो है वो स्टेप्स जो है उसके अंदर डिफाइन किए हो, आपने अपने तमाम इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को जो है डिफाइन किया हुआ हो,
आपने जो है वो जो डिफरेंट रिलेशनशिप जिनको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उनके बारे में आपने जो है बात की हुई हो, ठीक है, कि किस तरह के व्हाट इफ क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडल आंसर करता है उसकी आप बात करें। अगर आपने जो है वो जो डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल जो पैरामीटर्स लिए हुए हैं उन पैरामीटर्स के बारे में बात करें। दीज आर द मिनिमम थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट अ फाइनेंशियल मॉडल। अच्छा जी, अब जैसा देखें यहाँ पर मैंने बात की किस तरह से जो है वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल वेज है, ठीक है। आप अपने एजम्पशन बताते हैं, आप अपने इनपुट और आउटपुट को जो है डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडल जब आप क्रिएट करते हैं तो एक्सेल के अंदर आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सेल में अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, देयर इज अ फीचर कॉल्ड सेल कमेंट्स। You can use the cell comments feature to explain to the user that what this cell does or what the cell is all about. ठीक है, it is actually the part of documenting your model. Then you include model description, ठीक है, आपका मॉडल जो है वो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। Then version description, ठीक है। There when you develop your model initially, right, there can be different versions of the model that you will be building, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो मॉडल के जो है डिफरेंट वर्जन जो है वो आपने जो है वो क्रिएट किए हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो एक अच्छी अप्रोच जो है वो ये है कि जनाब के आप जो है वो अपने जो मॉडल के जो डिफरेंट वर्जन है उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप बनाइए, ठीक है। क्यों? और अपना जो मॉडल है जब कभी भी जो है फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अंदर जो है मेजर चेंजेस किए हैं तो जो आपको रिकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप अपने मॉडल का डिफरेंट वर्जन क्रिएट करें। सबसे पहले पहला आपका जो मॉडल था उसको आप नाम दे दें XYZ मॉडल वर्जन 1। फिर आपने फर्दर चेंजेस किए तो उसको आप कहें XYZ मॉडल वर्जन 2 एंड सो ऑन। इससे फायदा जो आपको ये होता है कि मतलब आपके जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस जो हैं वो प्रोग्रेसिवली आपके डिफरेंट वर्जन में जो है वो सेव होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो कोई जो चेंज है अगर आप उसको अनडू करना है आपने तो आप सिंपली कह सकते हैं ओके मैंने जो लास्ट मॉडल बनाया था जो वर्जन 3 मैंने बनाया था वर्जन 3 के जो चेंजेस हैं वो मैंने अनडू करने हैं। ओके, तो वर्जन 3 के चेंजेस अगर मैंने अनडू करने हैं इसका मतलब क्या है कि मैंने मॉडल का वर्जन 2 इस्तेमाल करना है बिकॉज दिस इज द मॉडल इन विच आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड द चेंजेस दैट आई मेड इन वर्जन 3। अच्छा जी, डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग का मतलब जो है वो ये होता है कि जनाब अगर आपके मॉडल में कोई एरर्स आ रही है, रिमेंबर एरर्स जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है सिंटैक्स एरर और एक होती है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रॉपर स्टाइल था या जो लैंग्वेज थी जो जिसको सॉफ्टवेयर समझता है, ठीक है, उसमें आपने जो है वो अपना फॉर्मूला या अपनी चीज जो है वो नहीं लिखी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको वार्निंग देगा कि आपने जो है वो जो सिंटैक्स है वो सही नहीं लिखा, सिंटैक्स को करेक्ट करें, ठीक है। देन यू कैन करेक्ट द सिंटैक्स एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लॉजिकल एरर क्या होती है? लॉजिकल एरर का मतलब जो है वो ये है कि आपने सिंटैक्स सही लिखा है लेकिन सिंटैक्स के अंदर आपने फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स गलत डाल दिए हैं। अब जब आप वेरिएबल्स आप गलत डालेंगे तो उस सूरत में क्या होगा जनाब कि आपका जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखें कि एक्सेल जो है वो सिंटैक्स एरर जो है वो तो पकड़ सकता है आपके लिए लेकिन लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यू विल नीड टू लुक एट ईच एंड एवरी फार्मूला योरसेल्फ टू फाइंड आउट कि जनाब की गलती जो है वो क्या हो रही है। अब यहाँ पे एक्सेल जो हमको हेल्प आउट करता है, एक्सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जिसमें जो है वो हम एक वर्कशीट के अंदर या एक एक्सेल की मॉडल के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंट हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो डिफरेंट हमारे सेल्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ये आपको मजीद जो है वो क्लियर होगा। उससे देखिए फायदा क्या होता है, अगर हमारे पास लॉजिकल एरर आ रही है तो लॉजिकल एरर को समझने के लिए हमें ये पहले समझना जरूरी होगा कि जो डिफरेंट सेल्स में जो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं जो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है कहाँ से आ रही हैं। ये जो फार्मूला हमने डाला है इस फार्मूले के अंदर जो जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो एक्सेल शीट के किस सेल में है। तो जब हम रिलेशनशिप जब हमारे सामने व्यूएबल होती है तो उस सूरत में जो है फिर हमारे लिए लॉजिकल एरर्स को पकड़ना और डिबग करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। ये मैंने आपको सिंटैक्स एरर जो है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। सिंटैक्स एरर एक्सेल आपके लिए फाइंड कर सकता है, लॉजिकल एरर जो है वो आपके लिए फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये कॉमन जो है सिंबल्स हैं, ये कॉमन एरर्स मैसेजेस हैं, ठीक है, जो आपके सामने जो है वो अपीयर होते हैं व्हेन एवर यू हैव एनी इशू और एनी एरर इन अ पर्टिकुलर सेल्स। फॉर एग्जांपल जो पहला ये जो आपको हैश के 4-5 साइन नजर आ रहे हैं,
अगर आपको कोई सेल में ये लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब जो है वो ये है कि सेल की जो विड्थ है, ठीक है, वो कम है और जो नंबर्स उसके अंदर लिखे हुए नंबर जो है ज्यादा है, तो उससे व्हाट यू नीड टू डू सिंपली ड्रैग द सेल टू द राइट साइड सो दैट इट कैन बी विजिबल, ठीक है। इसके बाद ये फॉर एग्जांपल ये पाउंड वैल्यू है, पाउंड वैल्यू जो है अगर आपको लिखा हुआ नजर आता है तो उसका मतलब जो है ये है कि इस सेल के अंदर जो आपने फार्मूला डाला है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आर्गुमेंट जो है वो ऐसा या ऑपरेंड जो है वो ऐसा है कि जिसकी जो टाइप है वो रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर जो है जैसे आपने कहा कि जनाब के x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, और x जो है वो भी क्वांटिटेटिव है, a और b आपके ख्याल में जो है ये दो वेरिएबल्स जो है ये वो हैं कि जो कि जिनकी वैल्यूज जो है क्वांटिटेटिव है, लेकिन आपने जब ऊपर चेक किया तो पता ही चला कि जनाब के b जो है, b में जो है बजाय वैल्यू के टेक्स्ट डला हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल जो है वो अगर ऐसा होगा तो एक्सेल जो है फिर आपको बताएगा कि जनाब के यहाँ पर कोई ना कोई आपका जो है वो आर्गुमेंट या वेरिएबल ऐसा है कि जिसकी वैल्यू जो है वो नहीं है कि जो कि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे जितने भी जो एरर कोड्स हैं, ठीक है, यू नीड टू कीप देम हैंडी। इसको जो है आपने अपने सामने रखिएगा ताकि मॉडल बनाते वक्त अगर आपके सामने कोई एरर आए तो उसको जो है आप यहाँ से रेफर करके आप फाइंड आउट कर सकें कि जनाब एक्सेल मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। F7 is the magic key that you can use to correct the spelling mistakes, ठीक है। आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ जो है वो ये नहीं है कि आप जो है ये समझें कि जनाब के इंग्लिश को करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये तमाम की तमाम चीजें जो है मतलब करेक्ट इंग्लिश इवन इन द फाइनेंशियल मॉडल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू मस्ट check it, okay. You press F7 and Excel will actually check all the sheets and it will tell you कि जनाब के कहाँ पर जो है वो आपने स्पेलिंग की मिस्टेक्स की हुई है so that you can correct it। अच्छा जी, अब ये जो एरर्स की जो मैंने बात की है, ठीक है, एरर्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कि जनाब के टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो आपने डालना है, लेकिन अगर आपने जो है फार्मूला जो है गलत डाल दिया, ठीक है, यानी कि जिसमें वेरिएबल गलत है, तो जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो गलत आएगा, ठीक है। जब टैक्स वैल्यू जो है गलत आएगी तो अब ये आपका काम है जाके देखना कि जनाब के मैंने जो फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज जो है मैंने डाली हैं, जो वेरिएबल्स जो मैंने डाले हैं, ये वेरिएबल मैंने करेक्ट डाले हैं या नहीं डाले। अगर ये वेरिएबल्स जो है वो करेक्ट नहीं है डाले मैंने, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो वैल्यू जनरेट होगी वैल्यू जो है वो डिजायर्ड नहीं होगी, ठीक है। सो दी दीज आर ऑल कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर का मतलब जो है वो ये है कि आपने अपनी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है उसमें लॉजिक ही सही नहीं डाली, उसमें वेरिएबल्स ही सही नहीं डाले। When this is the case, then Excel will not catch these errors for you. You will have to catch these errors yourself. So it is very important. अब अगर आप देखें तो जो आप मॉडल को जो आप डॉक्यूमेंट करते हैं, वेरियस रिलेशनशिप्स को आप डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ये वो जगह है कि जहाँ पे जो है वो आप इस किस्म के लॉजिकल एरर्स को आप कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, then you will actually be spending a lot of time in order to debugging कि जी ये जो कॉमन में बात इश्यूज आ रहे हैं ये इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एक छोटे मॉडल में जो है ये शायद डिबगिंग करना जो है आपके लिए थोड़ा सा आसान हो, लेकिन जब आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे होते हैं कि जो कि सम टाइम दे इंक्लूड मैनी वर्कशीट एंड मैनी ऑफ द टाइम्स दे इंक्लूड मैनी एक्सेल फाइल्स, ठीक है। एक एक्सेल फाइल की आउटपुट दूसरी एक्सेल फाइल में जो है वो जा रही होती है, तो उस सूरत में जो है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की देन इट कैन बिकम अ नाइटमेयर फॉर यू टू लोकेट द एरर्स। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब जो है वो ये है जनाब कि आपने, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, you have a strange policy of donating 10% of your profits after tax to charity, ठीक है, but in a country charity donations are tax exempt, they are expensive, so charity is equals to 10% multiplied by after tax profit, ठीक है, and after tax profit is equals to revenue minus expense minus charity, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब के चैरिटी के अंदर जो है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के अंदर चैरिटी का वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द चैरिटी विल बी रेफर्ड टू एज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रेफरेंस चैरिटी, थस क्रिएटिंग अ सर्कुलर रेफरेंस। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है सेम इक्वेशन। Now, when this is the case, this is called a circular reference. Circular reference को सॉल्व करने का तरीकाकार जो है बड़ा आसान होता है कि हमारे पास जो है एक्सेल के अंदर जो है एक ऑप्शन मौजूद होता है कि जिसमें हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि
you should do many iterations of the calculation or hit and trial in order to calculate the value. So you don't have to deal with the circular reference yourself. All you can do is that you just enable this option in the Microsoft Excel, and even if there is a circular reference, then the Excel will take care of it automatically. Okay, you don't have to do anything yourself. Okay, अच्छा जी, go to special is the same thing. ठीक है, कि जो हमने बात की थी कि डायलॉग्स बॉक्स होता है, ठीक है, जस्ट लाइक पेज स्पेशल, ठीक है, मल्टीपल फीचर्स होते हैं, इसको जो है वो जब हम फाइनेंशियल मॉडल जब हम डेवलप करेंगे, ठीक है, we will use it and then you will understand it more. ठीक है, so this is the an overview of the financial model. इसमें जो मेजर जो चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा जो है मैं दोबारा रिकैप करता हूँ. ठीक है, what I have discussed with you. So I have discussed with you the definition of the financial model, that what a financial model is, what it does and what it doesn't. Okay, then I told you that when you are going to create the financial model, you need to incorporate as many relationships or interdependencies among various possible among various variables in your model as possible. Okay, doing so, what you will gain, you can answer a lot of what if questions, and if you don't do that, then it will be your model is going to be very limited with respect to the what if question. Then I talked about that what are the different applications of the financial modeling in accounting and corporate finance. And then I also discussed the academic qualifications and the relevant experience you need in order to become a financial modeler or a financial analyst. I also discussed the applications of financial modeling in quantitative finance. I told you that when you develop financial models in quantitative finance, then we are incorporating the probability element in your financial models. And when we include the probability element in your financial models, this model is called a stochastic model. Okay, and the values these models generate are not discrete values. That is not single digit values. Rather, the values are continuous or a range. These models are called the advanced financial models, and this is not our objective in this course because this is an introductory level course. So we will not be discussing the probability based financial models in this course. Then I also talked about the academic qualification experience and the various softwares used for developing a stochastic financial models. I told you that you normally need a higher degree for become an advanced financial modelers. You will need to use specialized softwares for developing such models, such as the MATLAB. You can also use different programming languages such as C, C++, Java, Python, R for developing these advanced models. Then I talked about some of the basics of Excel. I briefly discussed these basics, and I shall be discussing these basics in detail when we turn to the second week and discuss various Excel tools. I talked about navigating the worksheet, formatting, the formulas, paste specials, cell references, and cell and name ranges. Then I moved on to discuss the concept of the dependent and dependent variables. I talked about independent variables. What are those? They are also called the input or external variables. Then I also talked about some special class of the independent variables, which is called parameters. Parameters are independent variables, but their values are provided by the creator or the user of the model. That's why they're called parameters. Then I talked about the dependent variables. These are the variables whose values are calculated by the model. Okay. And I also said that there are two special types of dependent variables: intermediate dependent variables, and output dependent variables. Nonetheless, when we develop a financial model and we create output, we normally talk about just one dependent variable and not the two dependent variables, as I talked earlier. Then I discussed various steps of creating a good financial model. So the step one was that you should define and structure the problem. The step two is that you should define the input and output variables of the model. Of course, if you do not define the input output variable of the problem, you will not be able to develop it. The step three is decide who will use the model and how often. Very critical step, because if you don't know who your users are, then your model is not going to be good enough. Step four, understand the financial and mathematical aspect of the model. Now, this understanding
will help you locate and correct the logical errors in your model if they arise. Step 5, design the model. That is, come up with all the steps that you will go through in order to develop the model itself. Step 6, create the spreadsheet or write the VBA code. That is, develop the model in Excel itself. Step 7, test the model. Model testing is very important to make sure that all the output variables or the results are coming as desired. Step 8, protect the model. ठीक है, various techniques मैंने जो है डिस्कस किए हैं. ठीक है, मॉडल की प्रोटेक्शन जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपका जो मॉडल है, जो एक्सेल फाइल है, अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ में लग जाए कि जिसके पास जो है वो ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो your sensitive information can be in the wrong hands. Step 9, document the model. I have emphasized and emphasized and emphasized and re-emphasized that a good documentation of the model is very, very important. If you do not do good documentation of the model, even it will be very difficult for you to understand what the model does if you look at the model you have developed after few months or few weeks. So documentation is a very, very critical step in developing a good and efficient financial model. Step 10, update the model as necessary. As you use the model, as you go along, there are going to be various changes in the model. So you will need to update the model as per the user requirement. And you will need to update your documentation as well. No need to say that. Then I talked about the various attributes of a good financial model, how I'm going to distinguish between a good financial model and a bad financial model. So these are the various attributes of a good financial model. Number one, this model should be realistic. It should be error-free. It should be flexible so that it is able to answer a lot many what if questions. It should be easy to use. The formula should be easily understandable, and basically it will happen when you use the variables name that are logical and easy to understand. Judicious formatting, that is उतनी फॉर्मेटिंग की जाएगा जितनी जो है वो यूजर के लिए जो है वो एप्रोप्रिएट है, जरूरी है. नंबर फॉर्मेटिंग शुड बी एप्रोप्रिएट. मिनिमल हार्ड कोडिंग, रिमेंबर आई एम री एम्फसाइजिंग मिनिमल हार्ड कोडिंग. जितनी ज्यादा आप हार्ड कोडिंग करेंगे आपके लिए अपने मॉडल को अपडेट करना, चेंज करना, उसके डिफरेंट वर्जन क्रिएट करना आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा. देन your model should be well organized and easy to follow. There should be a good output production. That is, try to use the pictorial or the visuals मतलब as appropriate. बहुत ज़्यादा pictorial या बहुत ज़्यादा charts भी जो है आपको याद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे numbers आप समझते हैं कि appropriate है, काम करेगा, आप numbers use करें, और जहाँ पे आप समझते हैं कि numbers बहुत ज़्यादा हैं और ये graph या chart जो है वो ज़्यादा जो है appropriate होगा, use the graph or chart. Then good documentation. If the model does not have a good documentation, that means it's not a good model. Data validation, protect your model or put control so that only those values are entered which are desired. I also told you that there is no standard format or a structure for documenting the model. However, there are some common approaches that the financial modelers use to document their model. First is the assumptions, input and output, that these are the things that are included in the documentation. ठीक है कि जनाब आपने मॉडल को क्रिएट करते हुए क्या assumption लिए हैं, क्या आपके मॉडल के अंदर जो है इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स हैं. ठीक है, इसके बाद एक्सेल के अंदर जो सेल कमेंट्स का फीचर है, यू कैन यूटिलाइज दिस फीचर to insert comments so that when a user point the mouse to the cell, he or she can understand that what this particular cell in your model does. You should include the model description in your documentation. Okay. Then version description. I told you that if there are going to be various changes in your model, it is preferable or it is recommended that you should create different versions of your model so that if you need to undo changes in any of the version, then if there are different versions available, you have developed different versions, you can actually revert back to the previous version. Otherwise, if you are making changes in one file only, in one model only, it will be very difficult for you to understand that from where you started and where you ended up. Debugging का मतलब जो है वो ये है कि आप जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो फंक्शन मॉडल है उसमें क्या एरर्स हैं. ठीक है, there can be two types of error. There can be logical errors and there can be syntax error. Excel can help you find out syntax error, but Excel cannot help you find
the logical errors. There are certain tools that you can utilize to locate the logical errors, but much of the burden of finding the logical errors will be on you. But if you do extensive documentation and and your understanding of the mathematical and financial aspects of your financial model is strong, then there is a good chance that there will be minimal logical errors. We talked about syntax. Then I talked about various types of errors that Excel can show you in different cells. Here is a list of 8 common errors that Excel shows you, and you should keep this list handy with you when you are developing financial models, so that you can refer this list and find out what the Excel is trying to tell you. Spelling mistakes, as I told you earlier, if you are creating a financial model, it does not mean that you can make as many mistakes in English as possible. So Excel, as in Word, Excel also provides you the function key F7. If you press F7, then Excel is going to perform the spell check on your financial model wherever you have used the English language. And if there are any error, then Excel will point out to you, and then you can actually correct it. And you should do that all the time. Then this is what I have talked about, financial and mathematical aspect of the problem. ठीक है. Then I talked about the circular reference. Circular reference की हमने आपको मिसाल ये दी थी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें एक वेरिएबल, ठीक है, कि जो कि दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो एक ऐसी इक्वेशन में शामिल है कि जो कि पहले वेरिएबल को रेफर कर रही है. तो जिसके लिए जो है ये मैंने अभी आपको ये जो चैरिटी कैलकुलेशन का और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का जो है मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के अंदर जो है वो चैरिटी मौजूद है, और चैरिटी जो है वो बताते खुद जो है वो 10% of after tax profit है. So basically if you have such a situation, you have created such a formula, then it will end up in a circular reference situation. Fortunate enough, you can make changes in Excel settings so that Excel will automatically take care of the circular reference error, and you will not have to do it yourself. Okay, ji. So this is the overview of the financial modeling, what the financial modeling is all about, steps, features, different kinds of errors, and so on. Okay, so I shall stop here.